Next, preparation of colloids. Abhi the classification over. Next, preparation of colloids. Mainly three types of preparations are there. One is chemical method, next electrical method, and peptidization. Three methods: chemical, electrical, and peptidization. In the chemical method, again 3-4 types are there. One is double displacement. Double displacement, DD, double displacement. ये double displacement reaction में क्या है? It is forming arsenic sulfide is forming. Arsenic sulfide. Arsenic sulfide. Then H2O. Okay, double displacement, arsenic and sulfur. This hydrogen and oxygen. Then here SO2 and H2S. Here oxidation reaction. Oxidation reaction. Oxidation reaction में only sulfur is forming. Then hydrogen and oxygen becoming water molecule. Then auric chloride is forming gold. That means gold solution बन रहे. Here +3 to 0 means reduction. This is the reduction method. Double displacement, oxidation, reduction, and here hydrolysis. H2O means hydrolysis. Ferric hydroxide. Remaining HCl. Take the byproducts. Okay. So here these many types of reactions. Double displacement reaction से भी बनेगा, oxidation, reduction, and here hydrolysis. Hydrolysis. Arsenic sulfide. This is the colloidal solution. Then here sulfur salts, sulfur. Then gold solution. Then it is ferric hydroxide. This is also bigger in size, more than 1 nanometer. Okay, it is also not getting completely precipitation, so it is also colloidal. So this is the one method. Chemical method में again 1, 2, 3, 4 types. Double displacement, oxidation, reduction, and hydrolysis. Next, electrical and Briggs arc method. See, these methods generally lyophobic के लिए ये requirement है. Lyophilic के लिए इतना जरूरत नहीं है. Just you add dissolve in the water तो हो जाता है. कि lyophobic में क्या है? वो repulsion side between phase and medium. There is no attractions. That's why specific methods are required to prepare lyophobic salts. Okay. Next method is electrical method. This is specially for only metal salts. Metal salts के लिए. ये electrical method में क्या करते हैं? We are taking anode and cathode, two rods. In general observation, if you take this anode and cathode, if you touch these wires, then what will happen? कभी observe किया? Somewhere, anywhere, if two wires are meeting, if power is, sparks will come. General observation होता है. कभी बारिश आने टाइम में भी ट्रांसफार्मर और poles में भी होता है electrical wires. So if you touch these wires, a spark will come. वो spark में क्या होता है? वो metal, it will get melting. Each spark is nothing but a small amount of metal only. ठीक है? Continuously the sparks are coming means after certain time the wires will be okay. That means that every spark is nothing but the small amount of metal only. The spark means it may be just this dust particle जैसे होगा. So this process is going on in the water. This process is going on in the water. This what we are doing here. These two anode and cathode just we are touching. हम क्या preparation करना है? Gold solution बनाना है सर. Then we have to take gold rods. Then when we are touching this, spark will come. So spark में just these all are gold particles, very smallest particle. सर ऐसा क्यों हम मैं कट कर रहे तो कितना भी कट करो इतना स्मॉलर पार्टिकल कट नहीं कर सकते. ठीक है? That's why this is the best method. इसमें एक spark मतलब very small particle है. So like that, so many particle. Immediately it is getting condensation. Actually उसमें क्या होता है? Higher temperature raise होता है. Higher temperature में वो vapor में भी बनते हैं. Generally outside है तो vapor होता है. So but this process is going on in the water.
immediately get condensation, एक small particle, solid particle बनते हैं, ठीक है? So like this gold solution बनते हैं. Not only gold solution, कोई भी metal solution है तो this is one of the method to prepare to prepare colloidal solution. This is also known as Bradig's arc method. Bradig's arc method साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? वो कैसे होता है मतलब वैसे सिंपल मेथड है, जस्ट 2 electrodes टच करना है. दिस प्रोसेस गोइंग ऑन इन द वाटर. नेक्स्ट पेप्टाइजेशन. ये वर्ड सुना है इसके पहले? आरएनए केमिस्ट्री में आता है एक पेप्टाइड. व्हाट इज अ पेप्टाइड? पेप्टाइड सर हाँ बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है, लेकिन इन बिटवीन विच मॉलिक्यूल? पेप्टाइड बॉन्ड. डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो बेसिक भी चाहिए. डाइपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड्स. अमीनो एसिड्स. In amino acid, one amino group, one carboxylic acid group is combining, forming amide type of bond, that is called peptide bond. ठीक है? वो अलग है, ये अलग है, लेकिन सिमिलरिटी रहता है वर्ड स्पेलिंग में. दिस इज द पेप्टाइजेशन. ये पेप्टाइजेशन इज रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, TPT. इन जनरल क्या होता है? NaCl reaction with AgNO3 is there. What are the products? AgCl plus NaNO3. What is your observation? Here it is getting white precipitation, AgCl. This is the precipitation. अभी ये precipitation को कुछ ऐड करें तो X compound, then again it will get AgCl. These AgCl molecules will get separate. AgCl molecules get separate means indirectly it is dissolving. The AgCl in general तो dissolve नहीं होता है, लेकिन अभी AgCl dissolve होता है by adding some X compound. What's happening here? The precipitate is becoming a colloidal solution. AgCl is not splitting into Ag plus Cl minus. That is called solubility. ठीक है? और ionization बोलते हैं. If Ag plus and Cl minus if it is getting separate like that, that is called ionization or dissociation बोलते हैं. लेकिन ऐसा dissociation नहीं हो रहा है इधर, लेकिन precipitate तो गायब हो रहा है. Precipitate is disappeared. वो कहाँ जा रहे हैं? ये AgCl, if you use the ammonium hydroxide, suppose ammonium hydroxide ऐड किया, it is forming one complex. It is forming one complex. Silver and with ammonia, it is forming one complex. अभी एक सिल्वर गेटिंग सेपरेट, इधर पहले था सब AgCl is getting settled down. अभी एक सिल्वर तो सेपरेट हो गया, मतलब तो सॉल्युबल हो गया, राइट? सो अभी ये देखो ये बिगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं. एक कॉम्प्लेक्स है, एक ब्रैकेट के अंदर 4-5 मॉलिक्यूल्स है, एक बिगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, मतलब ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है? ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है? दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड. पेप्टाइजेशन इज द रिवर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, ये मेथड में हम लेते फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट. आज बना के कल ऐसा यूज नहीं करना है. आज प्रिपेयर करना है तो अभी वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करना है, उसके बाद इमीडिएटली यू कैन ऐड सम X component. X means here ammonium hydroxide or some other compounds. Then it is the precipitation getting dissolved. Okay, so this type of method is known as peptidization. Now ये एजेंट है, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट. पेप्टाइजिंग एजेंट. ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन.